गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में रूटेड है, वो कई तरह की हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स के रीच में भी नहीं है। तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटिंग की जो है पोटेंशियल को देखते हुए ही हम क्यूबिट्स में, एरर कनेक्शन में या स्केलेबल हार्डवेयर बनाने में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में देखते हैं। तो आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। मतलब कि जो बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिट में है, मतलब कि या तो ज़ीरो है या फिर वन है। इसके बीच का जो है पार्ट वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्यूबिट्स या फिर क्वांटम बिट्स में कॉम्पिटिशन्स करते हैं। मतलब क्यूबिट्स क्या होते हैं? ज़ीरो या वन या उसके बीच का जो पार्ट है वो भी उसको कवर करते हैं। मतलब जो कैलकुलेशन करते हैं तो ज़ीरो या वन के ही नहीं, ज़ीरो वन टू थ्री ये सब तो मतलब अ, आपके बिट्स में आ जाते हैं। लेकिन ज़ीरो और वन के बीच में जितना भी फासला है, मतलब इनफाइनाइट का, वो भी, या फिर ज़ीरो और वन को अगर आप कंबाइन भी कर दो साइमल्टेनियसली, उसको भी क्यूबिट्स कवर कर लेते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है। तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट है। तो क्यूबिट्स जो है बहुत ही यूनिक होता है। क्यूबिट्स जो है वो स्टेट ऑफ सुपर पोजिशन में भी रह पाते हैं। मतलब ज़ीरो और वन दोनों को एक साथ भी जो है वो सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर समझो कि अब आप कॉइन अगर आप टॉस करते हो तो या तो उसमें हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। जो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर है उसको तो यही लगता है कि या तो हेड्स आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन जो क्यूबिट होगा उसको क्या करेगा कि जब कॉइन नीचे गिरने वाला है तो जो हेड्स और टेल साइमल्टेनियसली आ रहे होते हैं एक बार जब आपके टेबल पर गिरते हुए, कोलैप्स होने से पहले, उसको हम भी कैलकुलेट कर लेता है क्यूबिट। वो उसको भी जो है वो एक तरह से स्पिनिंग कॉइन को भी जो है उसको आप देख सकते हो कि वो क्यूबिट्स हैं। ठीक है। क्यूबिट्स जो है एंटेंगल भी हो सकते हैं। मतलब एक क्यूबिट को अगर आपने मेजर किया तो आपको दूसरे क्यूबिट के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे एक पेयर ऑफ ग्लव्स हैं, दो अलग अलग बॉक्सेस में। आपने एक को ओपन करके देखा तो आपको दूसरा किस स्टेट में जो है वो ग्लव दूसरे बॉक्स में पड़ा है आपको उससे पता लग जाएगा। तो इसको आप फास्टर इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो। जितना मर्जी डिफरेंस हो, डिस्टेंस का डिफरेंस हो एक क्यूबिट्स के बीच में, तो अगर आप यहाँ पे उस एक क्यूबिट में कुछ चेंज करते हो तो वहाँ दूसरी जगह पर भी क्यूबिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एंटेंगलमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग या स्पीडिंग अप कॉम्पिटिशन्स में हमें काम आता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, बट ऐसा नहीं कि वो क्लासिकल कंप्यूटर्स को हर टास्क में जो है वो आउट परफॉर्म कर देंगे। तो एक शोर्स एल्गोरिदम हम देखते हैं कि ये एल्गोरिदम जो है वो फैक्टराइज कर लेता है लार्ज नंबर्स को कुछ ही मोमेंट्स में, जो अदरवाइज क्लासिकल कंप्यूटर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेंगे। ठीक है। ऐसे ही आईबीएम ने क्यू सिस्टम वन बनाया, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सर्किट बेस्ड कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर है। गूगल ने साइकामोर प्रोसेसर बनाया, जिसने 200 सेकंड्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लग जाएंगे जिसे सॉल्व करने में। और जो अभी रीसेंट है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गूगल का विलो क्वांटम चिप। ठीक है। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है आपको इस बार, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहा है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है गूगल की ये, कि विलो ने एक टेस्ट को सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, जो टेस्ट अदरवाइज सुपर कंप्यूटर्स को 10 ट्रिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसे सॉल्व करने में। ठीक है। तो गूगल की जो विलो चिप है ये क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही या क्यूबिट्स पे ही काम कर रही है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनको बनाना बहुत एक्सपेंसिव और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होता है। जो करंट क्वांटम कंप्यूटर्स है वो अभी भी लिमिटेड क्यूबिट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमें मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब आप खुद ही सोचो, ज़ीरो से लेके वन के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो क्यूबिट्स को कवर करने हैं। तभी हम कैलकुलेशंस जो है वो उस लेवल पर पहुंचा पाएंगे कि हम कंप्यूटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। तो इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने भी नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने 8 साल के लिए एलोकेट किए हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन ईडी इन्वेस्टिगेशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कि ईडी को रोका गया है कि वो डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से एक्सेस या कॉपी नहीं कर सकते। सैंटियागो मार्टिन के ऊपर जो एक रेड पड़ी थी अभी फ्यूचर ग्रुप के, एक फ्यूचर कंपनी जो कि लॉटरी किंग से रिलेटेड एक केस है।
ठीक है। तो इस केस में जो है वो कहा गया है कि कोर्ट ने फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है एज़ कम्पेयर टू लॉ इन्फोर्समेंट। तो पहले तो हम देखते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट बनाया गया, जिसको 1957 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम दिया। एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो फेमा और पीएमएलए केसेस देखती है। ठीक है। तो इसमें ऑफिसर्स होते हैं आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, और डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट जो होते हैं ईडी के डायरेक्टर, वो उसको हेड करते हैं। अब ये केस जो था, कुछ 22 जगहों पर मेघालय पुलिस की कंप्लेंट के बाद ईडी ने जो है वो सर्च की थी, और एक इलीगली मोनोपोलाइज किया जा रहा था लॉटरी बिजनेस को मेघालय में, उससे रिलेटेड ये फ्यूचर गेमिंग ग्रुप के ऊपर ये केस किया गया था, जिसमें कि 12 करोड़ कैश भी मिला था। कंपनी जो है वो लार्जेस्ट परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी थी, सभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसने डोनेट भी किया था। तो ये जो ऑर्डर आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी जो है वो डेटा कॉपी नहीं कर सकती जो उनको डिवाइसेस मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस डिसीजन का जो अमेज़ॉन इंडिया या न्यूज़ क्लिक के पटिशन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है डिवाइसेस जो कलेक्ट किए गए हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज द्वारा, उसको भी एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कोर्ट द्वारा कि ये वायलेशन ऑफ प्रिवेसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और अ, कोई भी प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अभी तक इसको एक्सेस नहीं कर सकती हैं। सीनियर ऑफिशियल्स को कहा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन इस डिसीजन से हिंडर नहीं होगी, बट फिर भी उन्होंने इस डिसीजन को एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन कहा है। लॉयर्स जो कि इस ग्रुप के बिहाफ पर जो अपेयर हो रहे थे, उन्होंने राइट टू प्रिवेसी का जो है वो एक तरह से प्रेसिडेंट सेट करने को कहा है, और डिसीजन जो है वो एक पोटेंशियल प्रेसिडेंट सेट करता है कि जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो अलेज्ड क्रिमिनल्स हैं, वो उनका भी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है। ठीक है। तो फ्यूचर गेमिंग ग्रुप के ऊपर जो ये रेड पड़ी है, या जो ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो ये डिसीजन आया है कोर्ट का, ये लॉ इन्फोर्समेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ बैलेंस करने के लिए एक प्रॉपर केस बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 17 बच्चों को दिया है। तो ये एनर्जी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, जील और इंथुजियाज्म जो है चिल्ड्रन का, उसको सेलिब्रेट करता है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये चिल्ड्रन के लिए इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है इसको, और हर साल इसको दिया जाता है 7 कैटेगरीज में। 5 साल या 18 साल से कम के बच्चों को, 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम के बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है, और उनकी जो ये एक्ट या इंसिडेंट जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो विद इन 2 ईयर्स ऑफ दैट अवार्ड जो है या नॉमिनेशन, वो किया होना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो अपोजिशन लीडर्स ने क्रिटिसाइज़ किया है एनएचआरसी के चेयरपर्सन सिलेक्शन प्रोसेस को। तो एनएचआरसी क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो ये जो राइट्स होते हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी किए हैं, उनको एनफोर्स करती है। 12 अक्टूबर 1993 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पेरिस प्रिंसिपल्स से अलाइंड है ये। चेयरपर्सन जो होते हैं इसके, वो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 7 डीम्ड मेंबर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है। जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिलेक्ट करते हैं, या अपॉइंट करते हैं एक्चुअली, 6 मेंबर सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, जिसमें कि पीएम आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो दोनों हाउसेज में होते हैं, और यूनियन होम मिनिस्टर आते हैं। ठीक है। चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं उनकी 3 साल की टर्म होती है, या फिर 70 साल तक की एज तक, जो भी पहले आ जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं या रिलीज़ किए हैं एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस के। तो ये जो सर्वे है, ये कैरी आउट किया जाता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ, जिससे कि इकोनॉमिक और ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल एस्टैब्लिशमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज सेक्टर में जो है वो मेजर किए जाते हैं। ये सर्वे कलेक्ट करता है डेटा ऑन वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस सेक्टर का, जिसमें कि वर्कर्स आते हैं, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमोल्यूमेंट्स,
फिक्स्ड असेट ओनरशिप, ये सब देखी जाती है उन एंटरप्राइजेस की जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये डेटा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो अगर हम हाईलाइट्स देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो इस सेक्टर में है वो बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में, और ग्रॉस वैल्यू एडेड बेस में जो है वो राइज हुआ है। फीमेल ओन्ड प्रोप्राइटी एस्टैब्लिशमेंट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, और एमोल्यूमेंट जो हर हायर्ड वर्कर को दी जाती है वो भी इंक्रीज़ हुई है, और इवन इंटरनेट यूज़ भी जो है वो इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीनलैंड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने जो है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दोबारा से बताया है कि वो ग्रीनलैंड को ख़रीदना चाहते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड है, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में लोकेटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। सराउंडेड है ये आर्कटिक ओशन से, ग्रीनलैंड सी से, डेविस स्ट्रेट से और बैफिन बे से। ग्रीनलैंड जो है वो एक टाइम पर डैनिश कॉलोनी होता था, और अब ये डेनमार्क का ही ऑटोनॉमस प्रोविंस है। ग्रीनलैंड जो है वो पोलर जोन में एग्जिस्ट करता है। यूएस इसे क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट एरिया है ये, सिंस कोल्ड वॉर इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिली। यूएस ने अपना एक यहाँ पर एयर बेस भी बनाया हुआ है। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पर यह है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स में भी बहुत रिच है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे हो रही है यहाँ से न्यू वाटरवेज निकल सकते हैं, जिससे कि आर्कटिक रीजन को एक्सेस मिल जाएगा यूएस को, अगर वो इसको कैप्चर कर लेता है तो, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is quantum computing. This topic is important for your science and tech section. So quantum computing, which is rooted in quantum mechanics, promises to solve multiple or complex problems beyond the reach of classical computers. So that's why we are progressing towards development of qubits, improving the error correction, and also scaling up the hardware for the same. Okay, so let's see what is quantum computing. So generally your classical computers that you want me operate, they operate on the principles of classical physics, which only sees the computing in the format of bits, that is either in zero or one term. Okay, but quantum computers, they rely on quantum bits, that is uh, computing can be partly zero and partly one simultaneously. So all the data that exists between 0 and 1, which is infinite, qubits try to solve that puzzle also. Okay, so this ability to exist in multiple states is very unique to qubits. Qubits can exist in a state of superposition, holding both 0 and 1 at the same time. So you can learn, or you can understand this with a very simple example, that if you flip a coin, a normal classical computer would be able to only see that it would fall in either heads or in tail. Okay, but what qubits would be able to do, they would be able to see the spinning coin which has not yet fallen, but sometimes it comes as head, sometimes it comes as tails, and it appears to be coming both as heads and tails sometimes. Okay, so this is superposition allows the quantum computers to perform multiple computations at once. Qubits can also be entangled, which means that their states are intrinsically linked, which means that if you measure one qubit instantly, it would provide information about the other one also. For example, if a pair of gloves are kept in separate boxes, if you open one, you would be able to see the state of the glove in the other box also. So this is very great for the for the secure communication also. Okay, so it would allow faster information processing also. Okay, so entanglement facilitates simultaneous information sharing and speeding up computations also. So quantum computers are technologically very advanced, but they may not always outperform classical computers in every task, especially the tasks that you do in routine. We have this Shor algorithm also, which factorized large numbers in moments compared to millions of years, which would be required by classical computers. IBM introduced Q System 1, which is the world's first circuit based commercial quantum computer. Then we have this Google's Sycamore processor, which was able to solve a problem in just 200 seconds that would take a supercomputer about 10,000 years. But the most important one that you can expect a question in this year's prelims is about Google's Willow, which is the first quantum processor, and it completed a standard test in just 5 minutes, which would take the best supercomputers in the world
to about 10 trillion years to calculate. Okay, so this illustrates the rapid advancement in quantum computing. So building quantum computers is extremely expensive and technically complex. So these are some limitations of quantum computing. And current quantum computers, they have limited qubits, but they are solving major problems. But solving major problems require millions of qubits. Like I've told you that there's the between 0 and 1, there is almost infinite numbers that qubits need to calculate or compute in order to serve the astronomical research or drug discovery. Okay, so recognizing the potential of quantum computing, India has launched this national quantum mission, and government has allocated 6,000 crore over 8 years to advance quantum technology and develop quantum computers in India. Okay, so the next topic is Supreme Court's order on ED investigation. This topic is important for your governance section. So in a landmark decision, Supreme Court has prohibited the Enforcement Directorate from accessing and copying data from electronic devices which were seized during a raid on Santiago Martin, which is known as the Lottery King. So this decision has emphasized the protection of fundamental rights, including the right to privacy, and how to balance it with law enforcement. So first of all, let's see what is Enforcement Directorate. So the origin of Directorate can be traced back to 1956 when an enforcement unit was formed, and in 1957 the unit was renamed as Enforcement Directorate. So it's a specialized financial investigation agency which deals with the FEMA and PMLA laws. So it is headquartered in Delhi and it is governed under the Central Vigilance Commission Act of 2003. So it is composed of officers from IPS, IRS, and IAS services, and it is headed by a director. So in November, ED conducted searches at 22 locations after a complaint by Meghalaya Police regarding a company called Future Group or Future Company, and which illegally monopolized the lottery business in Meghalaya. The raids uncovered 12 crore plus cash, and the company was the largest purchaser of electoral bonds, contributing more than about 1300 crores to political parties, to all political parties. Okay, so what has been the Supreme Court's order now? So this order by Supreme Court has directed ED to not access or copy data from seized devices belonging to this group, and it has also stayed summons under the PMLA to requiring the individuals to appear for data extraction purposes. So this case will have repercussions for the other cases also in which the digital devices have been seized, including in the Amazon India and NewsClick petitions. So this plea has emphasized the violation of privacy and constitutional rights due to unrestricted access to sensitive personal and business data. Okay, it has also highlighted that there is absence of procedural safeguards as of now. That's why investigative agencies need to take care. So, senior officials have described this order as unprecedented, but they have said that this would not hinder their investigations. And lawyers who were appearing for this group, they argued for interim relief, and they highlighted that there is infringement of privacy and there is need for defined procedures in such cases. Okay, this decision will set up a precedent in protecting people or accused against self-incrimination. Okay, so this may also establish new standards for balancing law enforcement objectives with constitutional rights. So the next topic is Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. This topic is important for your social issues. President of India will present the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar to 17 children. This award is organized to celebrate the energy, determination, ability, zeal, and enthusiasm of our children. It is the highest civilian honor for children in India. And this award is organized by the Ministry of Women and Child Development. It is awarded annually to children for exceptional achievements in 7 categories. So, a child should be above the age of 5 years and not exceeding 18 years to be eligible for this award. The act incident achievement should have been within 2 years of the last date of receipt of application or nomination for the year for consideration. Okay. So the next topic is National Human Rights Commission. This topic is important for your
polity section. So opposition leaders have criticized the NHRC chairperson selection process as fundamentally flawed and predetermined. So what is NHRC? It is a statutory body which is responsible for the protection and promotion of human rights in India. It enforces rights which are guaranteed by the Constitution of India, and it was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act. So uh, it is aligned with the Paris Principles for promoting and protecting human rights. So NHRC comprises of a chairperson, five full-time members, and seven deemed members from statutory commissions. The chairperson and members are appointed by the President of India after the recommendation by a six-member selection committee, which comprises of the PM, Speaker, Deputy Chairperson, Leader of Opposition in both houses, and even Union Home Minister. And chairperson and members, they hold office for a 3-year term or until the age of 70, whichever is earlier. So the next topic is annual survey of unincorporated sector enterprises. This topic is important for your economy section. Ministry of Statistics and Program Implementation has released the results of annual survey of unincorporated sector enterprises. So this survey is carried out with the primary objective of measuring various economic and operational characteristics of unincorporated non-agricultural establishments in manufacturing, trade and other services sector. This data is collected on various economic characteristics, including workers, the gross value added, emoluments paid, fixed asset ownership, outstanding loan, besides different types of operational characteristics like type of ownership, nature of operation, registration status, etc. This data serves as a key input for policy making. Okay, so what are the highlights of this new data? So according to this data, the total number of establishments in this sector has increased substantially, and the GVA has also increased. Percentage of female propriety establishment has also increased. Average emolument per hired worker has also increased. Percentage of establishments using internet has also grown significantly. Okay. So the next topic is Greenland. This topic is important for your international relations. So recently, US President-elect Donald Trump has once again expressed interest in buying Greenland, which is the world's largest island, located between the continents of North America and Europe in the North Atlantic Ocean. So it is geographically considered as part of the North American continent. It is surrounded by the Arctic Ocean to the north, Greenland Sea to the east, by the North Atlantic Sea to the southeast, Davis Strait to the southwest, and Baffin Bay to the west. Okay, Greenland was once a Danish colony and it is now an autonomous province of Denmark. Greenland is in the polar zone where winter temperatures reach as low as minus 50 degrees Celsius. Why it is mattering? Why does it matter to US now? So it is a strategically important area whose strategic importance rose during the Cold War period, and the US has a large air base also here. Okay, Greenland is also rich in rare earth minerals. Apart from that, because of global warming, melting of ice is happening. Therefore, new opportunities are arising for waterways to open up in this Arctic region, and all major powers are keen to boost their presence in the Arctic region since then. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.